Hi everybody, welcome to today's super duper fun session which will give your preparation that much needed boost and take it to a completely new level. Why? Because today I'm here to share with you a bunch of amazing hacks which are very effective and can prove to be extremely useful for your upcoming JEE main exam. You know what? These hacks are so powerful, they can reduce a 10-step solution to just a 2-liner one. I mean, wow. So I have a couple of shortcuts, a couple of tricks, some formulas and some very important results which you have to compulsorily master before you go and take your exam. Alrighty guys, because these hacks are 100% reliable and genuine time savers, and that's why you cannot afford to not know them. Alright, so sit tight, grab your pens and notebooks, and without any further delay, let's quickly get started. Please listen to me, people. There is a lot of great stuff being planned for you to facilitate your preparation and to help you out in every way possible. So make sure you're subscribed to the channel so that you don't miss out on any important update or notification which can benefit you. And if you want to interact with the teachers more conveniently, if you want your doubts to be solved personally, then I would suggest you to join the Telegram group as well. Last but definitely not the least, I hope you have downloaded the Aakash Byju's app for JEE and NEET. It has some very unique features. I'll just talk about a few of them. You know, the videos are made using some very creative animations, because of which you don't just get to study and learn, you actually are able to visualize what's going on. You get to see what's going on, you get to feel what's going on, because of which the concept gets internalized in your system very, very firmly. And some of the most tricky and complicated concepts become very easy to understand. Also, you get access to a lot of daily quizzes, there are booster sessions, there are skull crushers, you have chapter-wise tests, previous year question papers, mock tests, and once you attempt any of these tests, you get a detailed performance report, or rather a report card, which is prepared using the SWOT analysis approach: strength, weakness, opportunity, and threat. So once you have your detailed performance report with you, you get to see what are your strength areas, what are your weak areas, and accordingly you can improvise your preparation so that in future you can perform better than that. Also, there are live classes being conducted which work on dual teacher model. You must check it out. You will thoroughly enjoy it. So you get to learn from a live teacher, okay? And along with that, simultaneously, you also get to watch videos of star educators. It's a real fun experience and you must check it out. Book a free trial class today itself. And now, without any further delay, let's get started with the very first trick. This one is used to crush the problems of mathematical reasoning in a jiffy. अब generally क्या होता है कि आपसे जो mathematical reasoning के सवाल पूछे जाते हैं, they are one of these 3 types. Either the question will ask you to check that the given statement is logically equivalent to what out of the given 4 options, or the question will demand from you the truth values of the individual statements, or the question will ask you to check if the given statement is a tautology or a fallacy. Now, whenever you get any question like this, what you have to do is, instead of drawing the truth tables, which will cost you a lot of time, instead you will use this shortcut, which is convert all individual statements to sets. Now, how does this shortcut work? Understand very carefully. आपको जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा, सबसे पहले आप उसमें से चेकआउट करेंगे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स. हर एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल स्टेटमेंट को आप एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे. Suppose you have 2 individual statements P and Q, so you will consider P to be set A and Q to be set B. Right?
you have to keep in mind that this symbol is equivalent to intersection and this symbol is equivalent to union. All right, next, this is very important. P implies Q is same as negation P wedge Q. Now, this has what significance? अगर आपके पास negation P wedge Q है, मतलब कि आप इसको A complement union B की तरह treat करेंगे. That's the importance. Okay, keep this in mind. They are acting as same or identical to each other for us in terms of shortcut. Similarly, you have De Morgan's law. जैसे आपके पास negation of P wedge Q अगर आ जाता है, तो you will treat this to be same as A union B का complement. क्योंकि अगर set A is playing the role of P, that means negation P is same as A complement. And B is playing the role of Q, that means negation Q is same as B complement. So negation of P or Q is A union B complement, and we know from the De Morgan's law of sets, this is A complement intersection B complement, which is equivalent to negation P and negation Q. As simple as that. And if you want to similarly check for the next De Morgan's law as well, it is applicable when you have such an expression, negation of P and Q. So what do? You treat this as same as A intersection B whole complement. We know this is equal to A complement union B complement, which we know is equivalent to negation P wedge negation Q. That's it. Also keep in mind, and this is extremely important, whenever you have to check that a statement is a tautology, you convert that statement in the set format, you simplify it. In the end, if you get universal set as the final outcome, that implies that your original given statement is a tautology, which means that under any circumstance, it will always come out to be true. It will have its truth value as always true. Similarly, if you get phi as the answer, null set as the answer, that would imply that your original statement is a fallacy. So under any circumstance, no matter what, the outcome will always be false of that statement. ठीक है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है. And now let's attack this past year JEE main question. यहाँ पे लिखा है, this statement is logically equivalent to what out of the given 4 options? Now the first step obviously is to check the nature of the given statement. ठीक है? So let's convert this into set format so that we are able to conclude something about its nature. तो suppose मैं इसको capital P ले लेती हूँ और इस पूरी चीज को capital Q statement ले लेती हूँ. Cool. So what I have is P implies Q. We've recently learned that this is same as negation P wedge Q. Now substitute कर दो इनकी original values. This is negation small p, wedge capital Q is nothing but Q implies P. But Q implies P is again same as negation Q wedge P. And this is exactly the moment when you have to replace the statements with the respective set notations. तो यहाँ आ जाएगा A complement, wedge means union. This is B complement union A. Right? यूनियन आपको पता है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, यूनियन आपको पता है एसोसिएटिव ऑपरेशन है, तो आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ एक यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज योर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यूनियन एनीथिंग इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट. दिस मीन्स व्हाट? दैट योर ओरिजिनल स्टेटमेंट इज डेफिनेटली अ टॉटोलॉजी, इजंट इट? राइट? तो ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये पक्का से हर सर्कमस्टांस के अंडर ट्रू है. लेट्स चेक आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस व्हिच वन इज अ टॉटोलॉजी. बिगिनिंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज P implies P and Q. Right? What does this mean? Negation P wedge P and Q. Convert this right now into sets. So you will get A complement union A intersection B. This is equivalent to, use the distributive law, A complement union A intersection A complement union B. A complement union A means what? Universal set intersection A complement union B. What will come out to be the intersection? Obviously A complement union B. And this is equivalent to negation P wedge Q.
right? So your first statement is coming out to be logically equivalent to negation P wedge Q, which is definitely not always true, right? It is not a tautology, so A is not the correct option. Let's move on to the next option. It is P implies Q. What does this mean? Well, this is same as negation P wedge P implies Q. P implies Q is further same as negation P wedge Q. And now you convert everything into sets. You will get A complement union B. Now A complement union A complement is same as A complement union B. So this is coming out to be negation P wedge Q. Again, not a tautology for sure. This statement is not always true. Its outcome is not always true. Its truth value is not always true. Moving on to the third statement, P implies P if and only if Q. Right? Again, this is logically equivalent to negation P wedge P if and only if Q. But P if and only if Q, you know, is nothing but P implies Q and Q implies P. Right? So negation P wedge, what is P implies Q? Negation P wedge Q. And Q implies P is negation Q wedge P. Clearly, this is not a tautology straight away. Right? This cannot always give you true answers. You can anticipate that very easily. Correct? So even this is not the correct option. What is the last option? P implies P wedge Q. P implies P wedge Q. Again, same result you will use. P implies Q is negation P wedge Q. So this will be negation P wedge Q. Convert into sets. You get A complement union A union B. Now A complement union A will give you universal set union B. This is nothing but universal set. And this is the time when we have a smile on our face because this has come out to be the right option. Right? So your given statement was a tautology and your fourth statement in the option is coming out to be a tautology. So they both are logically equivalent. Correct? And if this question you would have solved using truth table, तो आप imagine करो इन चारों statements के लिए आप एक column बनाते and how much time it would have costed you to reach the final answer. क्योंकि fourth option correct बैठा है. तो शुरू के तीन को set format से check करना बहुत आसान था as compared to आप truth table बना के check करते. Okay, so this hack is a definite time saver. Do take a note of it. Moving on to the next question. Again, it's a past year JEE main question only. It says P implies P and negation Q is false. Read the question very carefully. Then the truth value of P and Q is what? ठीक है? मुझे दिया हुआ ये statement false है. Again, इसका nature पता करना मेरी पहली duty है. That's the prime, that's the first step. तो start करते हैं. Again, P implies Q मतलब negation P wedge P and negation Q. Right? Convert into sets. So this will be A complement union A intersection B complement. Distributive law लगा दो because union is distributive over intersection. So you get A complement union A intersection A complement union B complement. Now A union A complement is universal set intersection A complement union B complement. So your answer will come out to be A complement union B complement, which you know from the De Morgan's law. This is A intersection B whole complement. And what is this? This is like P and Q का negation. ये मुझे false दी हुई है. मतलब ये false दिया हुआ है. Now negation of something is false only when that something itself is true. So negation of P and Q is false implies P and Q is true. पर conjunction दो statements का true सिर्फ और सिर्फ तब होता है when they both are individually true. Isn't it? The conjunction of two statements is true if and only if those two individual statements are true. If any one of them happens to be false, the conjunction happens to be false. So P and Q true implies P is true and Q is true. Okay, so TT sitting in option D is the right option. Okay, I hope you understood this trick very nicely and now it's time to move on to the second one. This one is less of a trick
and more of a very important and an extremely useful result. It is the LH rule, very famous, very popular, favorite among students, favorite among teachers, and trust me, it's favorite of the JEE team as well. Most often than not, you have at least one question in your paper based upon LH rule. When do you use it? Well, you use this when your limit comes out to be of any one of the two indeterminate forms, 0 by 0 or infinity by infinity. So you have to understand the storyline. See, आपके पास एक f upon g के look का function होगा. Okay, quotient function basically. इसकी लिमिट आपको निकालनी है as x approaches a. करेक्ट. सबसे पहला स्टेप ये है कि आप न्यूमरेटर फंक्शन में x इक्वल्स a सब्स्टिट्यूट करोगे और आप f ऑफ a निकालोगे. सिमिलरली डिनोमिनेटर फंक्शन में भी आप x इक्वल्स a आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, उसको आप x की जगह रख रहे हो जानबूझ के, दैट्स योर शॉर्टकट. उससे आपके पास g ऑफ a आएगा. देन यू विल कंप्यूट f ऑफ a अपॉन g ऑफ a. ओके, अगर f ऑफ a 0 आ रहा है, g ऑफ a भी 0 आ रहा है, मतलब आप कहोगे आपकी लिमिट 0 बाय 0 फॉर्म की आ रही है. अगर f ऑफ a इंफिनिटी आ रहा है, g ऑफ a इंफिनिटी आ रहा है, तो आप बोलोगे आपकी लिमिट इज ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर क्लू, दिस इज गोइंग टू बी योर हिंट, दिस इज गोइंग टू बी योर सिग्नल टू ब्रिंग इन टू एक्शन द LH rule. Got it? See, technically what's happening is x is not equal to a and f of x is not equal to f of a, और g of x is not equal to g of a. हम लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. As x is approaching to a, f of x is approaching to 0. As x is approaching to a, g of x is approaching to 0, and hence f upon g is approaching to 0 by 0 or infinity by infinity. So things are approaching. But अपना शॉर्टकट ये है कि हम x को a रखेंगे, f of x की वैल्यू दैट मीन्स f of a निकालेंगे, सिमिलरली g of a निकालेंगे. अगर इनका रेशियो 0 by 0 या infinity by infinity आता है तो हम LH रूल लगा देंगे. ठीक है, अब लगता कैसे LH रूल? Well, it says that limit of f upon g is exactly same as limit of f dash upon g dash. तो अगर f upon g की लिमिट 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म की आती है, तो you will differentiate your numerator function with respect to x and separately differentiate the denominator function also with respect to x to get f dash upon g dash. और इसकी लिमिट आप निकाल लीजिए. अगर इसकी लिमिट आपको फाइनाइटली मिल गई, वेल एंड गुड, यही आपका आंसर है. अदरवाइज अगर f dash upon g dash की लिमिट भी 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म की आती है, so you will again differentiate. You will compute f double dash अलग से एंड g डबल डैश अलग से, एंड f डबल डैश अपॉन g डबल डैश की लिमिट आप निकालेंगे. इफ दैट कम्स आउट टू बी फाइनाइट, कूल, दैट्स योर आंसर. अदरवाइज दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टिल द टाइम योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म डज नॉट वैनिश. इसको बेटर समझेंगे एक सवाल से, बट उसके पहले लेट मी रिवील टू यू another extremely important and extremely powerful result, again one of the favorites of the JEE team. It is the E result. I'm sure you would be aware of it. If not, please take a note of this right now. Well, this one is used when your limit comes out to be of the indeterminate form 1 to the power infinity. अब 1 की पावर infinity, इसको पहली बात तो हम कहते हैं एक बहुत ही स्पेशल एक्सपोनेंशियल लिमिट. और इसके क्रिएट होने के लिए हमारे फंक्शन का लुक क्या होना चाहिए? f to the power g. Right? Our function should look like f of x to the power some another function g of x. So suppose this is the look of the function given to you और आपको इसकी लिमिट निकालनी है as x approaches a. Okay? What you'll do again, f of x is your base function and g of x is your power function. आप x की जगह a रखोगे base function में f of a निकालने के लिए. सिमिलरली आप x की जगह a रखोगे इन योर पावर फंक्शन g of a निकालने के लिए. Then you will compute f of a की पावर g of a. If this comes out to be 1 की पावर infinity, that's your hint. You have to stop right there and recall the God, which is your E result. What does it say? It simply says that limit of such a function which is coming out to be of the form 1 by infinity is actually equal to e to the power limit of f minus 1 times g. Now we'll remember that right now.
See, because it's the E result, you first of all have to write a big fat E. Now, once you have E, you already know something has to sit in its power. E है तो उसकी पावर में कुछ तो होगा, तो आपको क्या लाना है उसकी पावर में? लिमिट. लिमिट को एज इट इज चिपका दो. तो आपके पास लिमिट है, ये रही. इस डब्बे को यहाँ पे एज इट इज रख दो. लिमिट x टेंड्स टू a, ब्रैकेट स्टार्ट, बेस माइनस 1 टाइम्स पावर. Base minus 1 times power. Your base function is f of x. So base minus 1 times your power function, which is g of x. That's it. This is your E result. Got it? उसके बाद हम पूरी तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट निकालने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो भी लिमिट आएगी उसको E की पावर में रख के अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे. As simple as that. Fine. Let's quickly take a look at this question and see if we can tackle it. Here we have alpha and beta given to us as two separate limiting expressions. These are the roots of the equation ax square plus bx minus 4 equals 0. Then what is the ordered pair a comma b equal to? All right. Let's first of all focus on computing alpha. Alpha is limit x tends to pi by 4 tan cube x minus tan x upon cos of x plus pi by 4. This is of a quotient function type, isn't it? One function upon the other function. So let's plug in the value of x as equal to pi by 4 in the numerator. You will get tan pi by 4 whole cube, that means 1, minus tan pi by 4, again 1. So numerator is coming out to be 0. What about the denominator? You get cos of pi by 4 plus pi by 4, that means cos of pi by 2, which is again 0. Okay, so this limit is coming out to be of 0 by 0 form. Of course, we will quickly recall the LH rule. It will instantly come into action. We will differentiate the numerator and denominator separately. Let's do that. So you have 3 tan squared x into sec squared x minus sec squared x upon minus sine of x plus pi by 4. Okay, so alpha was limit of original expression, but limit of original expression was coming out to be 0 by 0. So we differentiated the numerator, differentiated the denominator. Its limit is also same as alpha. Okay, f upon g की limit लो या f dash upon g dash की limit लो, दोनों same होती हैं as per the LH rule if your original limit is coming out to be 0 by 0 or infinity by infinity. चलो अब यहाँ पर pi by 4 रख के देखते हैं. तो 3 times tan pi by 4, again 1 square is 1 into sec square pi by 4. You know cos pi by 4 is 1 by root 2. So sec pi by 4 will be root 2. Root 2 ka square means 2. Minus again 2 upon minus sine pi by 2. Right? So what is this? 1. Correct? So you have 6 minus 2. 4 upon minus 1 means minus 4. ओके गाइज, सो अल्फा मिल गया है. अल्फा हमको LH रूल लगा के मिला है. अब हम अगर बीटा की बात करें तो यहां पर देखो आपके पास लुक क्या है फंक्शन का. यू हैव अ बेस फंक्शन एंड यू ऑल्सो हैव अ पावर फंक्शन. बेस फंक्शन इज cos x, पावर फंक्शन इज cot x. ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज x को 0 प्लग इन कर देंगे जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है. तो बेस क्या बन जाएगा? cos 0 विच इज 1 और पावर क्या बन जाएगी? cot 0. You know as x approaches 0, cot x approaches infinity. तो 1 की पावर infinity बन गया. What is this बाबा? Special exponential limit. और जैसे ही ये बन जाती है, किस भगवान को याद करते हैं हम? How do we tackle this indeterminate form? With the help of our very important E result. E result कहता है कि limit of x tends to 0, cos x to the power cot x, which is right now coming out to be of the form 1 to the power infinity, is equivalent to बड़ा सा E, उसके ऊपर लिमिट चिपका दो, base minus 1 times power. This is my base, this is my power. Correct? तो cos x minus 1 times power. Perfect. अब कैच ये है कि मैम यहां तक तो पहुंच गए, अब इसकी लिमिट कैसे निकालें? क्योंकि एक बार इसकी लिमिट निकल गई तो उसको ई की पावर में रख देंगे, आंसर आ जाएगा. सही बात है. क्या आ रही है लिमिट?
यार cos x माइनस 1 तो बड़ा ही फेमिलियर एक्सप्रेशन है, हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो cos x minus 1 will be minus 2 sin square x by 2. Write e to the power limit of minus 2 sin square x by 2. And cot x I can write as 1 upon tan x. Okay, now what I'm going to do is, I will recall the standard limit that sin theta by theta as theta approaches 0 is 1. और अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x by 2 भी तो 0 को ही अप्रोच करेगा यार, क्या दिक्कत है? तो पहले तो इस माइनस 2 को बाहर निकाल लेते, करेक्ट? एंड नाउ आई नो दैट आई विल बी डिवाइडिंग बाय x by 2 का होल स्क्वायर एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग बाय x by 2 का होल स्क्वायर. फाइन. अब एज x अप्रोचेस 0 x by 2 अप्रोचेस 0, तो इस पूरे की लिमिट तो 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगी. ये क्या है? x by 2 का होल स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर बाय 4, राइट? तो x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स, और बाय 4 को बाहर ले जाओ तो 2 by 4 मतलब माइनस 1 by 2 बचेगा. नो प्रॉब्लम, राइट? अब इतने पोर्शन को देखो भाई, एज x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x ऑल्सो अप्रोचेस 1 और x upon tan x also approaches 1. So even this complete quantity is approaching to 1. So you are just left with this x. मतलब आपके पास बचता क्या है? e to the power minus half limit x approaches 0. Obviously this is 0. यानी कि you have e to the power minus half into 0. मतलब e to the power 0 मतलब 1. तो अपना बीटा 1 आ रहा है और अपना अल्फा क्या आ रहा था? अपना अल्फा आ रहा था -4. तो अल्फा इज -4, बीटा इज 1. दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भाई आई नो इफ आई हैव अल्फा बीटा एज द रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डज इट लुक लाइक? x square minus sx plus p equals 0, where s is the sum of the roots, p is the product of the roots. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये अल्फा और बीटा रूट्स होंगे उसकी शक्ल क्या होगी? x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equals 0. तो यहाँ आता है x square plus 3x minus 4 equals 0. Isn't it? इसको आपको कंपेयर करना है ax square प्लस bx माइनस 4 इक्वल 0 से. तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 1 और b की वैल्यू आ रही है 3. अपने को चाहिए a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर विच इज 1 कॉमा 3, विच इज सिटिंग इन ऑप्शन D. All right, so in this question, I really like this question. इस सवाल में हमारे पास दोनों चीजें टेस्ट हो गई. हमारा LH रूल भी टेस्ट हो गया, हमारा E रिजल्ट भी टेस्ट हो गया. And these are the type of questions which are most probable to be there in your paper, जो आपको दोनों के दोनों results पे टेस्ट करें. And that's why these are very tiny results, both LH rule and the E result. But they are, oh my God, so powerful, so impactful. You have to retain them in your memory. You have to internalize them in your system. There is no choice. Next up is a very important result which you can treat as a shortcut also. It is the Leibniz rule, beautiful and very easy to remember also and to apply also. This is in general called the Leibniz integral rule, which means this rule has to do something with integration. Let me tell you when does it come into action. Whenever you have a situation of computing differentiation of integration, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव जब आपको निकालना हो तो आपको कौन बचाने आता है? आपका लिबनीज रूल बचाने आता है. ठीक है? Precisely speaking, you should have differentiation of definite integration, जहां पे limits of the definite integral have to compulsorily be either constants और functions of that variable जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो. यानी कि अगर आपके पास है d by dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ f of t dt, तो यहां पर जो a और b लिमिट्स होंगी ना इंटीग्रेशन की,
दे शुड बी ईदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स, क्योंकि आप डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो. मतलब मैं कह सकती हूं कि ए की शक्ल इन जनरल जी ऑफ एक्स की जैसी होनी चाहिए और बी की शक्ल इन जनरल एच ऑफ एक्स के समान होनी चाहिए. तो जब इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास होता है तब आपका लिबनीज रूल अप्लाई होता है, क्योंकि यहां पे चल क्या रहा है, आप डिफरेंशिएट किसको करना चाह रहे हो, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, right? And that's the condition for applying the Leibniz rule when you have to differentiate a definite integral. What does it say? कि differentiation of a definite integral is equal to f of upper limit times upper limit का dash minus f of lower limit times lower limit का dash. तो आपका जो इंटीग्रांड है वो f है. f of upper limit मतलब f of h of x टाइम्स h dash x अपर लिमिट का डैश माइनस f of g of x f of लोअर लिमिट टाइम्स g का डैश मतलब लोअर लिमिट का डैश. दैट्स इट. दिस इज इट. एंड ऑफ द स्टोरी. लेट्स नाउ मूव अहेड एंड अप्लाई इट इन दिस क्वेश्चन. Okay, again it's a past year JEE main question. It says f from r to r is a continuously differentiable function. f of 2 की वैल्यू 6 दी हुई है, f dash 2 की वैल्यू 1/48 दी हुई है. If integral of this is x minus 2 times g of x, compute the limit of g of x. Now because I have to desperately compute the limit of the function g, I first of all need to compute the function g. Okay, and g is sitting over here. So I will use this entire equation and isolate g on one side, push everything else to the other side. क्योंकि मेरा एम है कि मैं g को किसी तरह से निकालूं, तो मैं उसके ऊपर फोकस कर रही हूं. मैं उसको एक तरफ रख दूंगी, बाकी सब दूसरी तरफ खिसका के आई विल सिंप्लीफाई. तो मेरा g क्या आएगा, g will come out to be इंटीग्रल 6 से लेके f of x 4t क्यूब dt अपॉन x माइनस 2. राइट? ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए, लिमिट ऑफ g ऑफ x. मुझे चाहिए लिमिट g ऑफ x x अप्रोचेस 2. तो यहां पर भी लिमिट आएगा. आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे मेरे पास कोशेंट ऑफ 2 फंक्शंस है ना. तो क्या करते हैं हम इस केस में, x को 2 प्लग कर दो. राइट? जब आप x को न्यूमरेटर फंक्शन में 2 प्लग करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 6 से लेके f ऑफ 2 4t क्यूब dt. बट f ऑफ 2 की वैल्यू तो 6 है, मतलब इंटीग्रल 6 से लेके 6 तक आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0. तो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 0. व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, x की जगह 2 रख दो, 2 माइनस 2 अगेन 0. मतलब जब आपने x को 2 रखा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ द इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0. तो व्हाट विल वी डू, वी विल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली बिकॉज वी विल नाउ अप्लाई द LH रूल. करेक्ट? तो लेट्स अप्लाई. लिमिट एज इट इज रहेगी, ऊपर वाली चीज डिफरेंशिएट होगी, मतलब d/dx ऑफ इंटीग्रल 6 से लेके f ऑफ x 4t क्यूब dt. एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर भी डिफरेंशिएट होगा, d/dx ऑफ x माइनस 2. ना d/dx ऑफ x माइनस 2 इज 1. 1 को मैं लिखूं ना लिखूं एक ही बात है. तो एक तो खुशखबरी ये है कि वी आर फ्री फ्रॉम डिनोमिनेटर. जनरली जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में बैठता है तो पंगे क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पे 0 आ जाए, वहां पे इन्फिनिटी आ जाए तो दिक्कत आ जाती है. यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, मतलब कुछ है नहीं. सो वी आर हैप्पी. लेट्स जस्ट सॉल्व द न्यूमरेटर एक्सप्रेशन. आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट अ डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स आर, एक तो कांस्टेंट है और एक इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड x इज दैट वेरी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट भी करना चाह रहे हो. तो सारी कंडीशंस आर बीइंग मेट, कुछ भी दिक्कत नहीं है. हम क्या करेंगे, हम अपने लिबनीज इंटीग्रल रूल, जिसको न्यूटन लिबनीज रूल भी कहते हैं, उसको याद करेंगे. उसने क्या कहा था कि f ऑफ अपर लिमिट टाइम्स अपर लिमिट का डैश माइनस f ऑफ लोअर लिमिट टाइम्स लोअर लिमिट का डैश. तो अपना इंटीग्रांड ये है 4t क्यूब. तो 4t का क्यूब मतलब अपर लिमिट का क्यूब, तो f क्यूब x टाइम्स f का डैश माइनस 4 इंटू 6 का क्यूब लोअर लिमिट का क्यूब टाइम्स 6 का डैश. 6 का डैश मीन्स d/dx ऑफ कांस्टेंट 6 विच इज 0. तो यानी ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ इतना पोर्शन. व्हाट इज this limit as x approaches 2?
कुछ मत करो यार, f तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो x की जगह सीधे 2 रख दो, तो यू विल गेट f क्यूब 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 है और f ऑफ 2, राइट, f डैश 2, करेक्ट। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, सो 4 टाइम्स 6 क्यूब इंटू f डैश 2 मीन्स 1/48, right? Solve this quickly and you will get 18 as the answer. Isn't it? What are you getting? Let's solve. This is 12. This is 2. You get 36 by 2, which is nothing but 18. तो समझ में आया आपको? क्लियरली सवाल ने नहीं बोला था कि भाई आप डिफरेंशिएट करो एक डेफिनेट इंटीग्रल को, तो ट्रिक या शॉर्टकट या फिर ये जो रिजल्ट था लिबनीज रूल का, वो राइट इन द फर्स्ट स्टेप नहीं लग रहा था। लेकिन जब हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डीकोड करना, अनलेयर करना स्टार्ट किया सवाल को, तो बीच में कहीं हमें समझ आया कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि हमें डिफरेंशिएट करना था एक डेफिनेट इंटीग्रल को, तब हमने एलएच रूल को याद किया। तो ये जो ट्रिक्स या शॉर्टकट्स हमने आज डिस्कस की हैं या हम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली राइट इन द फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। In many questions you may come across a step right in between the solution where you will be in a dire need to recall any one of these shortcuts, any one of these results, and use them to cut down your steps to reach the answer faster. That's why these are extremely handy, extremely important. On number 5 is a very interesting hack, or rather a shortcut, or rather a trick to kill the problems based on rank of a word. JEE मेन में बहुत बार आपके पास वर्ड्स आते हैं जिनकी आपको रैंक निकालनी होती है, एंड देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम अंडर दिस हेड। एक होता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की पोजिशनिंग डिक्शनरी में एग्जैक्टली क्या है। दूसरा तरीके का सवाल ये होता है कि उस वर्ड से पहले कितने वर्ड्स डिक्शनरी में बैठे हुए हैं। दोनों तरीके के सवालों को आप इस शॉर्टकट से बहुत ही आराम से टैकल कर सकते हो। And what does the shortcut say? It has a beautiful algorithm. I want you to understand each step of it. In fact, write it down and I will apply it in 1 or 2 questions to make you understand how does it work. The first step of the algorithm is whatever word is given to you, जिसके rank की आपको बात करनी है, आप उसके सारे letters को scatter करके इज्जत से लिख लो। अब हर letter की कोई तो positioning होगी, right? तो लेट्स से आपके पास स्मॉल है, राइट? यू नो दैट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए कम्स फर्स्ट, देन कम्स व्हाट? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. So L comes second. Okay, so both the L's we've marked as second because they come second in the alphabetical order. Then M comes third and S comes fourth. So first you scattered all the letters and then what did you do? आपने ऑर्डरिंग के हिसाब से उनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, जितने भी लेटर्स हैं उस हिसाब से। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। आपको क्या करना है? लेफ्ट टू राइट मूव करना है। क्या करना है लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए? क्या लिखा है देखो यहाँ पे, काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हुज पोजिशनिंग इज स्ट्रिक्टली लेस, लेसर नहीं, यहां आपको लिखना है स्ट्रिक्टली लेस than the rank of the current letter and write that number below the respective letter. Basically this means आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, मतलब आप S से शुरू करेंगे। आपको S नहीं लेना, S की पोजिशनिंग क्या है? 4। 4 से स्ट्रिक्टली लेस कितने नंबर्स आपको 4 के राइट में दिख रहे हैं? सिर्फ राइट देखना, 4 को मत देखना। 4 से स्ट्रिक्टली लेस कितने नंबर्स आपको राइट साइड दिख रहे हैं? तो 3 छोटा है, 1 छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है, 4 छोटे हैं, तो आप इसके नीचे 4 लिखोगे। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है इफ रेपिटेशन k टाइम्स डिवाइड बाय k फैक्टोरियल। हमने देखा 4 से छोटा 3 है, 1 है, 2 है, 2 है, पर 2 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे बाय 2 फैक्टोरियल। आया समझ में? देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? एक बार s के बारे में काम हो गया, अब हम m के पास चलेंगे। m की ऑर्डरिंग पे क्या लिखा है? 3। 3 से स्ट्रिक्टली छोटे उसके राइट पे कितने नंबर्स बैठे हैं? तो 1 छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है, तो 3 बैठे हैं, तीनों छोटे हैं। स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, तीनों बैठे हैं, और लेकिन 2 तो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एम भी गया, एम पे काम हो गया है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, कमिंग टू द नेक्स्ट अप इज ए।
ए की ऑर्डरिंग पे क्या लिखा है 1, 1 से स्ट्रिक्टली छोटे कितने नंबर्स उसके राइट पे बैठे हैं, एक भी नहीं, तो यहां पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यू हैव एल, एल की पोजिशनिंग क्या लिखी हुई है सेकंड, 2 से कितने छोटे नंबर बैठे हैं उसके राइट पे, इक्वल नहीं, 2 से स्ट्रिक्टली छोटे मतलब या तो 1 हो या तो कुछ नहीं हो सकता ना, 1 ही हो सकता है सबसे छोटा, तो 1 तो बैठा नहीं है, मतलब इसके राइट में भी इससे छोटा कुछ नहीं बैठा, तो यहां 0 आएगा, और इसके राइट में भी ऑब्वियसली कुछ नहीं बैठा, तो 0 आएगा। ओके, वंस दिस मच इज डन, देन यू हैव टू मूव टू स्टेप नंबर 3. Step number 3 says to move from right to left. आपको 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and so on लिखना है depending upon how many letters you have in the word. तो जैसे small में 5 letters हैं, तो आप right to left move करोगे, यहाँ लिखोगे 0 factorial, फिर 1 factorial, फिर 2 factorial, फिर 3, और ये कहानी 4 factorial पे रुक जाएगी क्योंकि आपके पास 5 ही letters थे। तो ये आपको तब तक करते रहना है, एंड से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तब तक जब तक सारे लेटर्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ओके लेट्स मूव टू स्टेप 4, मल्टीप्लाई द 2 डिजिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी लेटर। ठीक है भाई, तो 4/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 4 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, 4/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 3 फैक्टोरियल। Similarly, 0 multiplied with 2 factorial, which is 0, 0 multiplied with 1 factorial, 0, 0 multiplied with 0 factorial, 0. तो आपने जो 2 नंबर्स हर एक लेटर के नीचे लिखे थे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक है, यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। व्हाट आर यू गेटिंग एज द आंसर व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम? 4/2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 into 2 is 48, तो 48 प्लस 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 into 3 18, 18 upon 2 9. So what is this coming out to be? 6 upon 2 is 3, 3 into 3 9, that's correct. So 57 आ रहा है, right? 57, तो 57 आपकी a की वैल्यू आ रही है, जब आपने सबको ऐड कर दिया तो आपके पास a आ रहा है 57. a represents the number of words before small in the dictionary. तो आपके पास जो अभी 57 आया है, 57 words are sitting in the dictionary before the word small. The exact rank of the word small will be 57 plus 1 मतलब 58. Got it? Rank of the word small is 58. I hope you understood the drill perfectly. Let's apply it in a past year. This is JEE main or JEE advanced question. It is definitely a past year question. This says letters of the word COCHIN are permuted and all the permutations are arranged in an alphabetical order as in an English dictionary. The number of words which appear before the word COCHIN. तो हमें सिर्फ A तक अपनी जर्नी तय करनी है, A+1 नहीं करना. A+1 will give me the exact ranking of the word COCHIN. I don't need that. I'm not asked that. I'm just asked the number of words before COCHIN. तो let's start. सबसे पहले COCHIN. मैंने सारे लेटर्स को फैला के लिख दिया. Now, let's see which one comes first in the alphabetical order. So you have A, B, C, D, E, F, G, H, I, right? तो C comes first. 2 C हैं, दोनों को 1 1 दे दिया. फिर H आता है, फिर I आता है, फिर N आता है, और फिर लास्ट में O आता है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले C आता है, फिर सेकंड में H आता है, फिर थर्ड नंबर पे I आएगा, उसके बाद फोर्थ पे N, उसके बाद O. अब क्या करूं मैं? लेफ्ट से राइट मूव करना है. तो देखो 1 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में, दिस इज नॉट 1, या 1 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में क्या बैठा हुआ है? कुछ भी नहीं. 1 से स्ट्रिक्टली छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो 0. 5 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में क्या बैठा है? ये चारों 5 से छोटे हैं और चारों डिस्टिंक्ट हैं, तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे, कुछ भी रिपीट तो हो नहीं रहा, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की यहाँ पे ऑब्वियसली कहानी नहीं बनेगी. फिर आ जाओ 1 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में कुछ भी नहीं है. फिर आ जाओ 2 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में कुछ भी नहीं है. 3 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में कुछ भी नहीं है. 4 से स्ट्रिक्टली छोटा उसके राइट में कुछ भी नहीं है. डन. Now start from right to left.
0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. Multiply the two digits beneath every letter. So multiply these two, these two, these two, these two, these two, these two, and then add their product. बाकी सब तो जीरो है, सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी. 4 factorial into 4, that means 24 into 4, 96. तो 96 आपकी ए की वैल्यू आ रही है, मतलब 96 words are sitting before the word COCHIN. And 97 is its exact rank, जो पूछी नहीं गई है. तो कोई बात नहीं. अब एक और सवाल करते हैं. लेट्स से मैं यहां पे कोचिन हटा के क्वीन कर देती हूं. ठीक है, क्वीन. तो आप कैसे टैकल करेंगे? देखो भाई, कोचिन में सी 2 बार रिपीट हो रहा था, लेकिन फिर भी फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ हमारे केस में. स्मॉल में भी एल 2 बार रिपीट हो रहा था, पर वहां पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आया. वी डिड डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. तो ऐसा नहीं है कि जब भी रेपिटेशन होगा आप डिवाइड करोगे ही करोगे. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द लेटर्स आर अरेंज्ड इन दैट वर्ड विच इज गिवन टू यू. जैसे क्वीन की बात अगर मैं करूं, लेट मी स्कैटर द वर्ड्स. यस, अब मार्क कर लेते हैं. ई कम्स फर्स्ट, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी एंड देन यू. करेक्ट, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. ना 3 के राइट में उससे छोटे कितने नंबर्स हैं? 1 है, 1 है और 2 है, और 1 2 बार रिपीट हो रहा है. तो ओवरऑल 3 नंबर हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल. चलो बढ़िया, दिस इज डन, दिस इज डेड. आगे ही जाना है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आगे ही जाते जाना है, पीछे नहीं आना है. अब Q is dealt with. Now we're going to move to U. 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं? You have 1, 1 and 2. अगेन 3 नंबर्स हैं, पर उसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं. U is also dealt with. Moving on to E. 1 से छोटे कितने नंबर्स हैं? एक भी नहीं. फिर से 1 से छोटे कितने नंबर्स हैं? एक भी नहीं. 2 से छोटे कितने नंबर्स हैं? एक भी नहीं. चलो बढ़िया है. Now 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Now multiply the two respective numbers beneath each letter and then add all of them. तो यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, तो मतलब इवेंचुअली मेरी a की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 factorial into 4 factorial plus 3/2 factorial into 3 factorial. Okay, 2 factorial is nothing but 2, 4 factorial is nothing but 24, this is 12. So you get 36 plus this is 2 itself and this is 6. So 3 into 3 is 9. Okay, 45. ठीक है, समझ में आया? तो 45 words are sitting before the word queen. Rank of the word queen is, इसकी rank क्या हो गई? 46. तो 46th word in the dictionary will be queen. Got it? And with that, it's a wrap, you guys. We are through with our discussion of 5 very effective and very helpful time savers, which can give you a great edge in the examination because they will help you save loads and loads of your time. Also, apart from these 5, I have tons of other shortcuts, tricks, and mini results with me that I can share with you. So do let me know in the comments if you want more of such sessions. I will definitely plan them for you. Till then, it's me, Bhumika, signing off. We'll meet you super soon again. Take care and keep learning. Bye-bye.